So before Rutherford proposed his model of atom, he actually conducted an experiment which is known as the gold foil experiment. तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रे से कौन करथिले आसा टिके देखिबा. In this experiment there is a radioactive source taken here. हैला ए सोर्स टा जो नैथिले से this is actually a sample of radium bromide. तार फॉर्मूला होची Ra2. And this sample of radium bromide, which is taken as the radioactive source, this emits alpha particles. So it's an alpha emitter. तो एठू जो alpha particles सब emit होची, that stream of alpha particle is made to pass in a straight line towards a gold foil. This is a gold foil. तो जो gold foil टा यूज होची, this is very thin. तार thickness टा about 1 micrometer रखाइतिला. 10 to the power minus 6 meter. So only gold can be made into such thin sheets because gold रा गोटे property अछि which is called malleability. So because gold is highly malleable, सेतिपाई तमे सेतरो अति पतला शीट सब तयारी करि परिबो. तो नाउ एठू जो रेडियोएक्टिव सोर्स रो अल्फा पार्टिकल्स एमिट होउची ताको सीधा नै कि गोटे गोल्ड फॉइल सहित कोलाइड करा होउची. And Rutherford observed what happens to these alpha particles after they come into contact with the gold foil. तो alpha particle गुडा को gold foil रो कुआडे जाउची ताको ऑब्जर्व करिवा पई the whole setup is surrounded by a detector. Again, if you remember, this detector is made up of zinc sulfide, which is a phosphorescent material. आमे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट रे भी सेम डिटेक्टर यूज करिचे. तो जो पॉइंट रे जाय कि अल्फा पार्टिकल्स जिंक सल्फाइड स्क्रीन सहित हिट करिवो से जगह आमे गोटे छोटो ग्लो गोटे स्पॉट देखि परिबा. तो स्पॉट्स को देखि कि आमे आइडिया लगै परिबा अल्फा पार्टिकल कुआडे जाउची. So what he observed, he actually made 3 observations. First होची, he observed that most of the alpha particles pass straight. तो straight जाउची माने कोन, एई जगह रे तमरो स्पॉट्स रो डेंसिटी बहुत अधिका थिबो. तो most of the alpha particles are coming into contact with the detector in this region. तो number 1 observation हैला that most alpha particles travel straight through the foil and are undeflected. तांकर पाथ किछि चेंज हेनी. But ता सहित से देखिले some of the alpha particles are also deflecting from their path. तो किछिटा alpha particle एपटो को डिफ्लेक्ट है कि एठी स्पॉट पाउचो. किछिटा alpha particle आरपटो को डिफ्लेक्ट है कि एठी स्पॉट पाउचो. तो number 2 observation was that some alpha particles deflect by small angles. अल्प अल्प एंगल रे डिफ्लेक्ट है कि स्ट्रेट न जाय कि टिके टिके डिफ्लेक्ट होउची. ता सहित there was a third observation. तो observation number 3 was occasionally an alpha particle travels back from the foil. माने सीधा बाडे ही कि पछकु बाउंड करिवो, पछकु रिबाउंड करिवो, रिफ्लेक्ट हे कि पळे आसीबो. सो दिस आल्सो हैपेंस, बट एटा बहुत रेयरली हुए. तार गोटे एस्टिमेट होउची अबाउट 1 in 20,000 alpha particles behaves like this. तो 20,000 टा अल्फा पार्टिकल भितरु गोटे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल रु स्ट्रेट बैक करिकि पछकु पळे आछी. सो दीज आर द 3 ऑब्जर्वेशंस ही मेड. So let me repeat again. Most of the alpha particles pass straight through the foil, but some alpha particles are deflected by small angles, and very few, a very small number of alpha particles rebound straight back from the gold foil. तो यही 3टा ऑब्जर्वेशन को बेस करिकी Rutherford could propose his model of atom. So now let us talk about what was the Rutherford's model. तो बिफोर वी टॉक अबाउट द मॉडल इटसेल्फ, प्रथमे आगे कथा बा एक्सपेरिमेंट रे जो ऑब्जर्वेशन थिला सेथरु कोन कोन कंक्लूजन हमें ड्रॉ करि परिबा. तो फर्स्ट होची, सिंस वी सी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, ता माने मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम मस्ट बी एम्प्टी. तो जदि अल्फा पार्टिकल रो कांटेक्ट रे बा ता सामना रे किछि नाही, इफ द स्पेस इज एम्प्टी, ताले से स्ट्रेट पास करिकि पळेबो. And since most alpha particles are just passing straight, tamane most of the space inside the gold atom is empty. But a few alpha particles were deflected. So that indicates atom has a very high density of positive charge in a very small volume inside the atom, or you can say at the center of the atom.
So this charge causes repulsion to the alpha particle and leads to a deflection from their path. तो ये टिके चित्र को देखो. If you compare Thomson's model with Rutherford's model, how the two ideas are very different. तो Rutherford कहउचंती most of the space in the atom is empty. तो जेतेबेले alpha particles जाउची, they are simply passing straight through the atom. There is nothing in its path to stop it. But atom रा center रे गोटे high density positive charge रहिची. तो because this is positively charged, यार चार्ज पॉजिटिव अच्छी, अल्फा पार्टिकल्स भी चार्ज टा पॉजिटिव, तो तांका भितर रिपल्शन हम. तो इफ एन अल्फा पार्टिकल कम्स इनटू कांटेक्ट विथ दिस सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज, ताहले से ता पाथ रो डिफ्लेक्ट हे जिवो, आइदर ता डायरेक्शन चेंज हे जिवो और रिबाउंड हे कि पछुको आसीबो. सो देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर एट द सेंटर ऑफ द एटम एंड दिस कोर मस्ट हैव अ वेरी हाई डेंसिटी. हाई डेंसिटी नहले तो पॉजिटिव चार्ज गुड़ाक कि अल्फा पार्टिकल गुड़ाक ता थ्रू रे स्ट्रेट पास करके पड़ेबो. तो जेहेतु डेंसिटी हाई अच्छी ता थ्रू रे जाई पारुनी, दे हैव टू बी डिफ्लेक्टेड. बट इफ थॉमसन्स मॉडल इज एक्सेप्टेड, ताहले कोन होंता, सेठी कथा होचे जे पॉजिटिव चार्ज टा गोटे बड़ वॉल्यूम रे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हे कि अछि. तो ता माने एठी जो पॉजिटिव चार्ज रो डेंसिटी बहुत कम रहिबो. जदि डेंसिटी कम रहिबो ताहले ऑल अल्फा पार्टिकल्स शुड जस्ट पास स्ट्रेट. तो जदि थॉमसन्स मॉडल ठीक हे थांता, ताहले से एक्सपेरिमेंट रे जो आमे डिफ्लेक्शंस ऑब्जर्व करूचे, किछटा अल्फा पार्टिकल डायरेक्शन चेंज हे जाउची, सेही चेंज टा ऑब्जर्व होंतानी. सो दिस इज काइंड ऑफ अ प्रूफ कि रदरफोर्ड इज फाइंडिंग समथिंग डिफरेंट व्हिच थॉमसन इज सेइंग. थॉमसन्स मॉडल कैन नॉट बी ट्रू, एथरो जणा पड़ुची. तो यही जो एटम रो सेंटर रे गोटे हेवी पॉजिटिव चार्ज अच्छी, हैविंग वेरी हाई डेंसिटी, सेटा को से ना देले गोटे न्यूक्लियस. एंड रदरफोर्ड कुड आल्सो एस्टिमेट द रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. तो अकॉर्डिंग टू हिज एस्टिमेट, द रेडियस ऑफ एटम is about 10 to the power minus 10 meter or 1 angstrom, and radius of the nucleus is about 10 to the power minus 15 meter, which is 10 to the power 5 times less than the radius of the atom. तो ये जो 10 to the power minus 15 meter को 1 femtometer की 1 फर्मी बोली कहती. तो जानी पारछो जे एटम रो कंपैरिजन रे न्यूक्लियस रो साइज टा एक्सट्रीमली स्मॉल. So most of the space in the atom is empty and there is a heavy, highly dense nucleus at the center of the atom which holds all the positive charge. So with this idea, Rutherford proposed his model of atom. So now let us talk about Rutherford's model. So this model of atom has two postulates. Postulate माने what are his ideas about the structure of atom. So postulate number 1 is the positive charge and most of the mass of the atom is densely concentrated in an extremely small volume. So this very small portion of the atom which carries all the positive charge and almost all the mass of an atom is called a nucleus. So there is a nucleus at the center of the atom. तो nucleus रो चार्ज यदि पॉजिटिव हैला आउ एटम टा न्यूट्रल, ताहले एटम रे नेगेटिव चार्ज भी थिबो, and negative charge of the atom was already discovered to be electron. So in postulate number 2 he says the nucleus is surrounded by electrons and electrons revolve around the nucleus with a very high speed in circular paths known as the orbits. So this is the basic idea in the Rutherford's model. So you can get a better picture by looking at this diagram. तो एठी हमें गोटे हाइड्रोजन रो एटम नैचे. So this is the nucleus of hydrogen atom. ये जो पोर्शन टा को मु शेड करूची, at the center of the atom there is a nucleus and there is a electron which is revolving around the nucleus in this circular orbit. So this is the basic idea. This is how nucleus and electrons stay together. So Rutherford actually presented a simple model for a one electron atom. जदि गोटे एटम रे गोटे इलेक्ट्रॉन अछि, ताहले this is how it is. तो एठी गोटे जोटे कैलकुलेशन करा हुए which you should have an idea. तो एठी टिके देखो, सपोज एटा हला सेंटर ऑफ एटम, तो ऑर्बिट रो रेडियस टा को हम लिखि परिबा r.
So we can say that distance between nucleus and electron is r. Okay. So there are three calculations which I would like to point out. When the electron is revolving around the nucleus, it must have a kinetic energy. So kinetic energy को Ek लिखिছি. So this kinetic energy can be shown to be equal to k z e square divided by 2r. A formula derivation सब केमती होबो that you will learn later in electrostatics. As of now, तमे directly formula टाको follow करि पारो. So what is k here? K here represents the electrostatic constant. तार value होची 9 into 10 to the power 9 Newton Coulomb square per meter square. Now Z hela atomic number and E is electronic charge and R is the distance between nucleus and electron, or R is the radius of the orbit. So sahi formula ansare kinetic energy of the electron is given by this formula kZe square by 2r. Simply the electron also has a potential energy which is written as Ep, and the potential energy of the electron is given by minus kZe square by r. So this is the formula of potential energy of the electron when it is present inside the atom. So the marker of potential energy is a negative quantity. Okay, remember that. So kinetic or potential dita jaka energy ko add kale, we can get the total energy. The total energy of the electron is given by Ek plus Ep. So if you add these two expressions, the final value will be minus kZe square by 2r. So this is something which you have to remember. So एठी दीटा जिनस important. गोटे होची the total energy of the electron when it is present inside an orbit around the nucleus is negative. Total energy is negative. Now it is also important to observe one more thing, that I can actually write kinetic energy Ek as negative of total energy. It mark karo total energy achi minus kZe square by 2r. तो minus E total, तो एपटे गोटे जदि extra minus sign नबो minus minus plus हो जिवो, तो minus E total is plus kZe square by 2r, and that is equal to kinetic energy kZe square by 2r. So we can say Ek is negative of E total. Similarly, we can also say the potential energy Ep is 2 times E total. So you have the expression for E total. एथरे जदि into 2 कलो, a 2 टा cancel हो, and you will get minus kZe square by r, which is equal to potential energy. तो energy गुड़ा का भितरे ए जो relations आसुची, these are also important for calculations. तो Rutherford's model लो दी तीनटा central जिनस अछि which you have to remember, that every atom has a nucleus at the center. Most of the positive charge and most of the mass is centered in the nucleus itself. Electrons revolve around the nucleus in circular orbits, and during their motion they will have a kinetic, potential and a total energy which are given through these formulae. And there is a specific relation between kinetic energy and total energy and potential and total energy. तो से relation गुड़ा को केमती कौन रहुची ताको ठीक से मने रखिबो. So this was a very simple model of atom which Rutherford proposed, and the model was backed by an experimental finding. However, this model had a big flaw. There is a big drawback. Now the drawback comes due to a principle which was proposed by Maxwell, which says charged particles when accelerated should emit electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation is otherwise known as light. तो लाइट टा तमे समझते आगु पढ़िथिबो, it is an electromagnetic wave. तो how light is generated, how an electromagnetic wave is generated, तार theory टा Maxwell देइथिले. तो केमती generate हुए light? When a charged particle is accelerated, it should emit electromagnetic radiation. तो तामाने देखो जदि आमे इलेक्ट्रॉन रो मोशन टा को देखिबा, the electron is revolving around the nucleus. So electron has some charge. We know that it has a negative charge.
and it is going in a circular orbit. तो जेतेबेले सर्कुलर ऑर्बिट रे गोटे जिनस बुलुची तार वेलोसिटी रो डायरेक्शन टा चेंज होउची. वेलोसिटी जदि चेंज हबनी ताल तो से गोटे स्ट्रेट लाइन ने जीवो. तो सर्कल ले जाउची माने प्रति पॉइंट रे तार वेलोसिटी रो डायरेक्शन टा चेंज होउची. सो इफ सम ऑब्जेक्ट हैज अ चेंजिंग वेलोसिटी, यदि वेलोसिटी चेंज होउची ता माने तार एक्सेलरेशन भी अच्छी. सो दिस इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल and it is accelerated. तो जदि गोटे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होउची ताल से कौन करिवो? It will emit electromagnetic radiation or emit light, and all of you know light is a form of energy. तामाने एथुरु जणा पड़ची that electron when it goes around in the circular orbit it should emit energy. Now if the electron is emitting energy during its motion ताहले कौन हबो? The E total of the electron will decrease, and E total is given as minus kz e square by 2r. So this implies minus kz e square by 2r should decrease. अच्छा, जदि गोटे नेगेटिव नंबर टे डिक्रीज होउची तार अर्थ तार जोटा मैग्नीट्यूड अच्छी which is kz e square by 2r, this is increasing. तो नेगेटिव नंबर टा डिक्रीज हैला ता माने तार मैग्नीट्यूड टा इंक्रीज होउची. इट बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव. एंड इफ kz e square by 2r increases, that implies r decreases. तो r टा कोन? r होउची ऑर्बिटर रेडियस. तो व्हेन इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड डिक्रीज. तो एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन कम्स आउट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन. हेले यार रिपरकशन कौन? रिपरकशन होची व्हेन द इलेक्ट्रॉन बिगिन्स टू एमिट एनर्जी, आर हैला डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो आर टा कमी जीवो. आर कमिबो ता अर्थ से ओरिजिनली जो रेडियस रो ऑर्बिट रे थिला ए रेडियस टा धीरे 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 कमिबो. सो इफ रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ग्रेजुअली डिक्रीजेस ता अर्थ से गोटे सर्कुलर ऑर्बिट रे रहिबनी, रादर इट विल टेक अ स्पाइरल पाथ until it falls into the nucleus. तो मार्क करो एठी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटर रेडियस टा धीरे धीरे कमी कमी जाउची. ता माने इलेक्ट्रॉन टा धीरे धीरे न्यूक्लियस पाखो को आसी आसी जाउची. तो फाइनली एमती बुली बुली से न्यूक्लियस भीतर पड़ी जिवो. तो इफ वी एक्सेप्ट मैक्सवेल्स थ्योरी टू बी ट्रू ताले रदरफोर्ड को मॉडल ले जो इलेक्ट्रॉन टा सर्कुलर पाथ रे हम रखुचे, इट कैन नॉट रिमेन इन अ सर्कुलर पाथ. ग्रेजुअली तार रेडियस टा कमी 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 फाइनली से न्यूक्लियस भीतर पड़ी जिवो. So as per calculations, it says the atom can only exist for about 10 to the power minus 8 seconds. If this happens, ताले गोटे atom टे 10 to the power minus 8 second परे नष्ट हो जिवो. Because if the electron falls into the nucleus, ताले अब atom रा existence किछि नहीं. So if an atom can exist only for about 10 to the power minus 8 seconds, ताले तो दुनिया रे कोनोसी atom exist करिवा कथा नुह. But we know that atoms are not like this. They exist. They don't collapse within 10 to the power minus 8 seconds. तेणु ता अर्थ गोटे आटम भितर ये जो स्पाइराल पाथ रो कॉन्सेप्ट ठीक नुह. तो सही जिनसटा को रदरफोर्ड एक्सप्लेन कर पारलेनी जे काहे कि इलेक्ट्रॉन टा स्पाइराल पाथ रे जाई कि न्यूक्लियस भितर पड़िबनी. बिकॉज मैक्सवेल्स प्रिंसिपल वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एट दैट टाइम. दैट इज हाउ लाइट इज प्रोड्यूस्ड. तार ऑलरेडी प्रूफ थिला. So since Rutherford's model is in a contradiction with an established theory, so that we can say is a drawback in Rutherford's model. ता सहित Rutherford model रो अन्य drawbacks भी थिला. तो in another drawback, if an atom has multiple electrons, more than one electrons, then how they are arranged around the nucleus. माने केतेटा ऑर्बिट रहिबो, गोटे ऑर्बिट रे केतेटा इलेक्ट्रॉन रहिबो, से विषय रे Rutherford किछि कहि नथिले कि तांकर एनर्जी केते केते हबो. तो रिगार्डिंग दैट रदरफोर्ड हैड नो आइडिया. एंड सेकंड अबाउट सेम टाइम गोटे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थिला व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. आमे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विषय रे नेक्स्ट कोनोसी वीडियो रे गोटे कथा हबा. तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रे जो जो ऑब्जर्वेशंस थिला सेगुडा को रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन करि पारलानी. तो बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉबैक्स एवरीबॉडी फेल्ट दैट रदरफोर्ड्स मॉडल नीड टू बी चेंज्ड. तो लेटर ऑन अन्य मॉडल सब आसिला व्हिच आर इम्प्रूव्ड मॉडल्स
but they are all based on the same basic idea. तो रदरफोर्ड जो न्यूक्लियस डिस्कवरी करथिले जे एटम रा सेंटर रे गोटे न्यूक्लियस अछि आ से न्यूक्लियस चारिपटे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करूची, दैट आइडिया इज स्टिल प्रिवेलेंट टू दिस डे. तो अन्य जो मॉडल आसीची they all build on that idea. So the idea of nucleus and electrons around the nucleus is credited only to Rutherford.